Hello and welcome. You're watching Morning Markets on Money9. I'm Sakshi Batra. फटाफट से शुभारंभ करते हैं आज की मार्केट कवरेज के साथ। बताएंगे आपको क्या संकेत मिल रहे हैं ग्लोबल मार्केट से आज की ट्रेडिंग सेशन के लिए, ताकि आप पूरे ट्रेडिंग सेशन के लिए तैयारी के साथ आज की शुरुआत कर सकें। तो सबसे पहले देखते हैं कि कल के हैंडओवर में क्या था, यानी कि कल मार्केट से क्या संकेत मिले, जो कि डोमेस्टिक इक्विटी मार्केट्स के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो खासतौर पर अगर आप देखेंगे 6 दिनों की लगातार विनिंग स्ट्रीक के बाद थोड़ी बहुत रैली में एक पॉज देखने को मिला कल के ट्रेडिंग सेशन में, जब बेंचमार्क इंडिसेस लाल निशान में बंद होते हुए हमें नजर आए हैं। तो ये पहले कंसोलिडेशन साइंस हमें देखने को मिले हैं एक शार्प रनअप के बाद, जो कि यूनियन बजट के बाद जो मार्केट्स को ट्रिगर मिला था, उसके बाद कहीं ना कहीं एक कंसोलिडेशन के साइंस नजर आ रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो सेंसेक्स में करीब 20 अंकों की गिरावट थी और साथ ही साथ 6-7 अंकों की गिरावट के साथ निफ्टी 50 भी 15,109 के लेवल्स पर बंद होता हुआ नजर आया, एब्सोल्युटली फ्लैट विद अ मार्जिनल नेगेटिव बायस। निफ्टी बैंक में हालांकि अभी भी तेजी बरकरार थी। जो शार्प रनअप हमने देखा पीएसयू बैंकिंग स्पेस में, उसकी वजह से और साथ ही साथ प्राइवेट बैंकिंग स्पेस भी काफी कैचअप कर रहा है। और कल के ट्रेडिंग सेशन में जहां पर आउट परफॉर्मेंस दिखी वो निफ्टी बैंक में थी। मिड कैप और स्मॉल कैप इंडाइसेस में भी अगर आप देखेंगे इन टैंडम विद द बेंचमार्क इंडिसेस लोअर ट्रेड होता हुआ नजर आया। इनफैक्ट अंडर परफॉर्म किया इन्होंने बेंचमार्क इंडिसेस को, और अगर आप देखेंगे तो तकरीबन 40 से 50 अंकों की गिरावट हमने स्मॉल कैप और मिड कैप सेक्टर्स में और इन स्टॉक्स में देखी। फटाफट से देख लेते हैं कि यूएस मार्केट से क्या संकेत मिल रहे हैं। और ग्लोबल मार्केट्स में अगर आप देखेंगे तो लगातार जो तेजी का दौर है वो देखने को मिला है। क्लोजिंग हरे निशान में हुई है, जहां एक तरफ आप डाउ जोन्स और S&P 500 में देखेंगे तकरीबन 0.3 to 0.4% तक का अपटिक देखने को मिला। वहीं नास्डैक में भी 0.5% तक की तेजी जरूर यहां पर देखने को मिली है। फ्रेश हाइस की तरफ नास्डैक अभी भी बढ़ते हुए नजर आ रहा है और 13,856 के लेवल्स पर बंद हुआ। वहीं S&P 500 और डाउ में भी अगर आप देखेंगे तो जो वीकनेस थोड़ा बहुत है वो जरूर देखने को मिली थी। लेकिन अगर आप एशियन मार्केट्स की अब बात करेंगे तो यहां पर क्या संकेत मिल रहे हैं ये भी आप देख लीजिए। फिलहाल के लिए हरे निशान में ही यहां पर बढ़त देखने को मिल रही है। अगर आप देखेंगे तो फ्लैटिश टू पॉजिटिव बायस के साथ निकी ट्रेड कर रहा है। वहीं हैंग सेंग और साथ ही शंघाई कॉम्पोजिट में भी तेजी के साथ ही कारोबार हो रहा है। एसजीएक्स निफ्टी में भी अगर आप देखेंगे तो बढ़त के ही संकेत मिल रहे हैं एज फार एज द इंडियन इक्विटीज आर कंसर्न। एसजीएक्स निफ्टी में अभी भी अपटिक है। 15,159 के लेवल्स पर सिंगापोरियन निफ्टी इंडेक्स कामकाज कर रहा है, यानी कि एक बार फिर बुल्स के लिए काफी पॉजिटिव न्यूज। 0.28% तक की बढ़त, 40 अंकों की बढ़त के साथ गैप अप ओपनिंग के साथ आज इंडियन इक्विटी मार्केट्स की भी शुरुआत हो सकती है। लगातार कमोडिटी मार्केट्स में भी काफी एक्शन बना हुआ है। अगर आप मनी मार्केट की भी बात करेंगे तो 72.86 के लेवल्स पर फिलहाल रुपया जो है डॉलर के मुकाबले काम करता हुआ नजर आया। स्लाइट अपटिक्स देखने को मिल रहे हैं, लेकिन एक काफी टाइट रेंज में इस समय जो रुपया है वो कामकाज कर रहा है। 0.25% तक का जंप अगर आप देखेंगे रुपी टू द डॉलर इंडेक्स में जरूर बढ़त देखने को मिली है। इसके अलावा देख लेते हैं कि क्रूड ऑयल प्राइसेस में किस तरीके का रुझान है। लगातार कई दिनों से जो तेजी देखने को मिल रही थी, 6 से 7 ट्रेडिंग सेशन से लगातार क्रूड ऑयल प्राइसेस में बढ़त थी। आज माइल्ड वीकनेस के साथ, यानी कि फ्लैटिश टू नेगेटिव बायस के साथ ट्रेड हो रहा है, लेकिन अभी भी $61 टू द बैरल के ऊपर ही ब्रेंट क्रूड ट्रेड करता हुआ हमें नजर आ रहा है। अगर आप WTI क्रूड की बात करेंगे तो $58 टू द बैरल के हिसाब से नेगेटिव 0.15% तक का जो डी ग्रोथ है वो फिलहाल देखने को मिल रही है। लेकिन अगर आप देखेंगे ज्यादातर जो इंडिकेशंस है वो ऑयल प्राइसेस को काफी सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से अगर आप देखेंगे कि 12 महीनों के ऊंचाई पर तो ऑयल प्राइसेस कामकाज कर ही रहे हैं और जो ग्लोबल फ्यूल डिमांड है वो भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। जो यूएस क्रूड ऑयल स्टॉक्स हैं उन्होंने भी ऐड किया है ऑप्टिमिज्म को, और साथ ही साथ अगर आप देखेंगे तो 7 स्ट्रेट सेशन में अगर आप गेन्स देखेंगे यूएस की अर्निंग्स का भी, उसका भी सपोर्ट आपको देखने को मिल रहा है ऑयल प्राइसेस में। लेकिन इंडियन मार्केट्स के लिए अगर ऑयल प्राइसेस बढ़ते हैं तो उसको बहुत अच्छा नहीं माना जाता, और कहीं ना कहीं इंडियन मार्केट्स की जो परफॉर्मेंस होती है उसको भी अपसाइड को कैप करने में इनका ऑयल प्राइसेस का काफी ज्यादा हाथ होता है। अगर ऑयल प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ेंगे तो मार्केट्स में थोड़ा बहुत सेंटिमेंट जरूर डैम्पन होता है। फटाफट से अब देख लेते हैं कहां पर आपको आज के लिए नजर रखनी है। स्टॉक्स टू वॉच में सबसे पहला नाम होगा महानगर गैस का। ऑलरेडी कल के ट्रेडिंग सेशन में हमने देखा कि 2.5% तक की मजबूती देखने को मिली है। काफी खबरें इस तरीके से भी आ रही थी कि पीएनजी और सीएनजी के प्राइसेस भी यहां पर हाइक हुए हैं, उसका रिफ्लेक्शन आपको महानगर गैस के प्राइसेस पे तो देखने को मिल ही रहा था। साथ ही जो नतीजे आए हैं काफी अच्छे नतीजे देखने को मिले हैं।
जो प्रॉफिट है 217 क्रॉस का देखने को मिला है Q3 FY21 में। अगर आप इसे कंपेयर करेंगे पिछले साल सेम क्वार्टर से तो 186 क्रॉस का प्रॉफिट कंपनी ने क्लॉक इन किया था। हालांकि अगर आप देखेंगे रेवेन्यू फ्रंट पर तो माइल्ड वीकनेस जरूर देखने को मिली है। साल दर साल 666 करोड़ रुपीस के आसपास जो रेवेन्यूज है वो इस समय क्लॉक इन हुए हैं और ये डिप आया है 744 करोड़ रुपीस से। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला स्टॉक कौन सा है। रेमंड पर आप नजर रखिए, 1.25% तक की गिरावट जो है वो कल के ट्रेडिंग सेशन में हमें देखने को मिली थी। कंसोलिडेटेड प्रॉफिट जो कंपनी ने पोस्ट किया है तकरीबन 22 करोड़ रुपए के आसपास का है Q3 FY21 में और ये शार्प डिक्लाइन है फ्रॉम 195 crore rupees that was seen in Q3 of FY20, and you can see a reflection of this weakness in the earnings this time on the stock prices in today's trading session as well. The revenues have also declined, if you see, from 1885 crore rupees down to about 1243 crore rupees in Q3 of FY21. So there could be some weakness that could be extended on this trading session on Raymond stock as well. Moving on to another company, and that is IG Petroleum. Over here, there was again a downtick of about 1% in yesterday's trading session. As far as the earnings are concerned, the company has reported a sharp rise in consolidated profit at about 62.9 crore rupees in Q3, and that's up against 4.5 crore rupees on a year-on-year basis. So there's a sharp uptick, and that could actually reflect in today's earnings as well. The revenues have also jumped quite sharply from 275 crore rupees up to about 315 crore rupees in Q3 of FY21. So there's a reversal of the trend that you could see on IG Petroleum in today's trading session. Moving on to another stock that will be in focus today, Berger Paints. Very strong set of numbers coming in for this stock as well. 1.5% uptick was seen in yesterday's trade, but the company has reported higher consolidated profit of about 274 crore rupees in Q3 FY21 as against 182 crore rupees in Q3 of FY20, and the revenues have also jumped to 2118 crore rupees from about 1700 crore rupees seen in the year-on-year quarter as well. So there's a strong top line as well as strong bottom line performance that you can see in Q3. Remember, all those factors that were holding on consumption due to the pandemic in 2020 is likely to get reversed in this quarter slowly and gradually. As and when the economy is opening up, things are getting back to normal after the pandemic. There are more and more people who want to consume more of paints and refresh their houses. Whitewash demand is also getting increased now, and that's one reason why you can see some improvement in Q3, and there's an expectation of improvement in quarter-to-quarter numbers even in the next quarter to come. So these are the important numbers. Again, Tata Steel is the stock that you need to really watch out for today. Of course, a 0.5% loss for the company in yesterday's trading session, but very strong and very robust numbers coming out from Tata Steel. The company has reported consolidated profit about 3989 crore rupees in Q3 FY21, and that's against a loss of 1,166 crore rupees in Q3 of FY20. So it has turned black. Again, revenue have increased to about 39,594 crore rupees from 35,520 crore rupees. So again, a jump on both the top line and the bottom line as well. Whole lot of factors working in favor for the steel companies right now. You can see this will be a counter that will be consistently to be watched out for the next few sessions and even months to come as well, as there's a kind of a reversal that's happening for the metal pack as well. A whole lot of external factors also working in favor for this sector, apart from the earnings factor that is working for the company as well. Lots of results being reported even today. So keep an eye out on Titan Company's results, NBCC, Indraprastha Gas, again from the oil and gas space. Hindalco will be reporting its numbers. HCL Infosystems, GAIL India, Eicher Motors from the auto pack will be an important number to track. Bata India, Bank of India, Aurobindo Pharma from the pharma space, again Asian Hotels, Archie's, and ABB India and 3M India will be other counters to really watch out for as far as the Q3 earnings are concerned. Remember, we are moving away to the fag end of the Q3 numbers. But so far, all the numbers that have come out have either been in line or most of them have actually beaten on estimates or the street estimates as well. So that has actually performed, given another sentiment boost to the rally that we have been seeing, whether it is from the budget trigger or from the liquidity trigger that we have been seeing so far. It is the earnings factor that is also providing the fundamental push right now to the earnings. Moving on to the stocks that you need to keep an eye out on today. Yes, there are recommendations for you that we've got. Shrikant Chauhan from Kotak Securities has given a buy call on SBI Life. 3.5% uptick for the stock even in yesterday's trading session. The stop loss you can keep on the stock would be 870 with a 920 to 950 kind of a target price that you can expect on the stock to touch.
Next stock will be from the banking space, and this is on the short side. Bank of Baroda, again a 1% loss in yesterday's trading session. It was trading around 80. The stop loss you can keep on the higher side at 82 with a target price of 75. So that could actually slip towards 75 levels as well. Moving on to another stock, and that is Jindal Steel and Power. Now this has been a stock where most of the technical experts have been giving a buy call over the last 3 or 4 sessions. 1% uptick even in yesterday's trading session. The stop loss has been recommended at about 305 rupees with a target price to be kept at 335 rupees in the days to come as well. Okay, moving on to another stock. So Jay Thakkar has recommended Indraprastha Gas to be on your counter. Remember, the company is also coming out with its results. So 2.5% uptick in yesterday's trading session. The stop loss you need to keep on the stock would be 547 with a target price of 575. So a buy call on Indraprastha Gas on a day when it's going to be coming out with its results as well. Moving on to another factor, and that's Berger Paints. After the stellar numbers, 1.5% uptick yesterday, and the rally is likely to get extended. With the stop loss you can maintain on the stock at 745. Target price given is quite sharp at about 820 from the current market price. So there's a sharp uptick that you can expect on this stock going forward from here. The last stock from Jay Thakkar would be from the banking space, and that is Kotak Mahindra Bank. A stellar quarter, but the stock has been quite volatile in the days that we have seen before. The stop loss you need to keep on the stock would be 1915 with a target price of about 2020. Again, a buy call, and this can also be kept for a long term, as most of the fundamental experts have also been betting big on Kotak Mahindra Bank as well. So you've got 6 stocks for yourself to start the trading day right. If you need to take a call right now in this kind of a market which is showing the first signs of consolidation, but it is a good idea to be stock specific, to select the stocks that you really want to get into. If there are attractive prices for the long term, you can build in your portfolio right now, and that's the idea that most of the fundamental experts and technical experts have been sharing with us on Money9. A whole lot of action to unfold on Money9 throughout the day, so stay with us.